یہ جو پرفارمنس دی ہے نا کہ اس کا نام راہم ہے, میننگ وہ اتنی, ایز شی سیڈ, کہ وہ اتنی بورنگ ہو سکتی تھی, وہ اتنی بورنگ اور اتنی یوزلیس ہو سکتی تھی, لیکن اس نے ایلیویٹ کر دیا اس سین کو. I wish they hadn't cut to Ushna. I wish they just kept the camera on her. Because she elevated that scene. She took it to another dimension. I don't know how I would have done it. I don't know how you would have done it. I don't know how she would have done it. And I think about it نا کہ نہیں مجھے سمجھ, لیکن انہوں نے کیا پرفارمنس دی ہے تھرو آؤٹ. میں کہتی ہوں شروع سے لے کے اب تک جو the other thing Nadia said that he has not kept her in the dark. He's not made her a villain. He's made her a woman جو desperate ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے, desperate ہے. And do you think she meant it کہ باہر اس کو بھیج دیتے ہیں, پاس کس کو, راہم کو باہر بھیج دیتے ہیں؟ I think that point she might have, لیکن وہ بھی کھیل رہی ہے نا, وہ کر رہی ہے کہ اور دیکھیں وہ اپنے بیٹے سے جب آ کے پوچھتی ہے کہ وہ ویڈیو تم نے ڈالی, کہتا میں نہیں ڈال کسی اور, میں بات کرتا ہوں, پھر وہ کہتی نہیں. You know, she thinks about, meaning اس کا جو انٹیلیجنٹ, وہی میں کہہ رہی ہوں نا, سارے کہتے ہیں نا کہ ہم ہینڈل کر لیں گے, کسی نے ہینڈل نہیں کیا. اس نے ہاسپٹل سے لے کے ان کے گھر جانے تک ہر چیز اس عورت نے ہینڈل کی. سو نادیہ نے ایک بات کہی کہ بہت گلو, ہاں اس نے ایک دستانہ پہنا ہوا ہے. اب یہ جو ایپیسوڈ اینڈ ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو, اپنے اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو باپ نے کہا نا اس چھری کو ہاتھ نہ لگاؤ, بہت تیز ہے, میں نے ابھی چھری تیز کی ہے. اور پھر وہ آتا ہے اینڈ میں شہریار, مے بی شی چاپس ہز ہینڈ آف. پھر وہ روبوٹ والا لگایا. اب آگے جا کے دیکھیں گے نا ہمیں کیا پتا, میننگ اگر ہم نے امیجن نہیں کرنا تو بہت ساری چیزیں مرینا جی نے ایک بہت ٹیکنیکل ریزن دیا نا کہ ایوری ون لائک آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہو, یہ میں نے ابھی سوچا. میں نے کہا ان لوگوں نے سوچا, میں بھی کچھ سوچ گیا, میں نے کیا پتا ہینڈ اس کا وہ کاٹ دیتی ہے. مینا جی سو مجھے سارے ایپیسوڈز ذرا سے ڈھیلے لگے, ڈھیلے ان دا سینس کہ اچھے تو سارے ہیں, ٹھیک ہے, وی آر ہیونگ فن واچنگ دیم ایکسیپٹ فار سن میرے دل, بٹ آئی فیلٹ دیٹ دے ور اے لٹل آن دی یو نو, جتنا ابھی جو ہمارا ایک بلڈ اپ ہے نا, آئی فیلٹ دیٹ دے ور اے لٹل آن دا سلوور سائڈ, بٹ وچ از فائن, بیکاز وہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں دکھاتے ہیں, پھر آپ نے ہلکا سا ایک دینا ہوتا ہے ٹائم جس میں آپ چیزیں ایبزارب بھی کر رہے ہوتے ہیں, کہانی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو مجھے ساری ایپیسوڈز میں اس دفعہ یہ لگا. مجھے ایک دو چیزیں, جو چیز مجھے انٹریگ کر رہی ہے کہ جمال کا اینگل کیا ہے اس ساری چیز میں, وی ڈونٹ نو. سہیل سمیر, ناٹ سہیل, اس کا جو وہ تو پیسے لے گا, وہ تو پیسے لے گا, لیکن اس کا اینگل, ہاں سہیل سمیر آلسو, اس کا تو خیر مجھے سب سے انٹرسٹنگ سہیل سمیر لگ رہا ہے کہ وہ کس طرف ہے, پیسہ بھی ہے اس کے پاس, تو کیا وہ اس دفعہ ذرا وہ سسپینس میں ڈالا ہے نا, بہن بھی ہے, وہ اس نے کہا میں بھی تو آپ کا بھانجا ہی ہوں, ٹھیک ہے لے پالک بھانجا ہوں, یہ ایک سینٹنس ہے جو سارے کہہ رہے ہیں, میں سنبھال لوں گا, میں سنبھال لوں گا, لیکن کون سنبھال رہا ہے؟ ارسا ہر چیز سنبھال رہی ہے, اور کسی کو سنبھالنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. شی از ایوری ویئر, شی از ڈوئنگ ہر پارٹ سو پرفیکٹلی. مجھے جو ایک چیز اسٹرینج لگی تھی وہ ڈاکٹر کو برائب کرنا. نارملی جب آپ ایک بڑے ہاسپٹل میں کسی کو لے کے جاتے ہیں اور ایک ہیڈ انجری ہے, تو obviously a neurosurgeon comes into play into this thing. You won't be bribing a neurosurgeon, وہ بہت پیسے کماتے ہیں, tons and oodles of money they earn. So اس کو اگر ایک جونیئر ڈاکٹر دکھاتے, یا اس کو ایک جو ہوتے ہیں نا کہ normally you have the surgeon and then there are either the interns or the junior doctors who walk around with them. So I feel that is a bit of a flaw for me in this whole thing. اور وہ ڈاکٹر کیوں ہر جگہ بھاگے گا پیسوں کے پیچھے, مجھے لگا وہ ایک ینگ ڈاکٹر ہے, نیورو سرجن, نہیں, آپ نے صرف اس کو دکھایا, سوری آپ کچھ بھی کہہ دیں میرے لیے, آپ نے جب آپ نے ڈاکٹر دکھا دیا, دس از دا ڈاکٹر, either you said so کا میں you know either you tell us ایک تو ویسے بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ کو a person that you who's performed all of this on her, who's done everything, is not he's not a cheap man, he's a very expensive person who probably has starting with the doctors کی تنخواہیں کافی کم ہوتی ہیں. ایڈمنسٹریشن میں تو نہیں تھا یہ کہیں, نہیں, he was the man handling it right from the word go. Especially آپ نے جب کہا ہے اس کو اس والے ہاسپٹل میں, اگر سستے ہاسپٹل میں رکھتے تو no issue. I feel this was a huge, for me, not for everyone else, just for me. But overall,
One thumbs up. Loved it. I had some issues. This scene I thought was very good, very clever. Because ये जो बार बार आप reinforce करते हैं ना एक ही चीज़, और आपको पता है कि memory में उसके problems हैं और brain में उसकी चीज़ें चल रही हैं. So that thing was very well done and I think she did it very well. इरसा ने बहुत beautifully perform किया कि बार बार उसका नाम ले रही है. Even second time भी जब hospital में बैठती है तो वो reinforce कर रही है उसको कि ये यही होगा, तुम और कोई चीज़ ना सोचो. बिकॉज देखिए ना उसके भी माइंड में इस दफ़ा वो फ्लैशेस ही हैं और अभी तक यही आया है उसके फ्लैशबैक में, नॉट शेरोज. ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड दैट्स बिकॉज ही हेल्प्ड हर. लेकिन वो उल्टा ले रही है. आई मीन दैट्स हाउ शी इज़ परसीविंग इट, बट वेरी गुड. आई हैड अ प्रॉब्लम विद द डॉक्टर. मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. एक तो वो हर जगह पहुंचा हुआ था, पूरी इन्फॉर्मेशन पेशेंट की बता रहा था. माँ बाप को नहीं बता रहा था लेकिन इनको सब कुछ बता रहा था. आई मीन उनको वो आप उनका वो क्या होता है क्रेडिट कार्ड नंबर भी बता देता तो इट वुड बीन ओके. फिर शम्सी जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे, हाँ शम्सी अब क्या हुआ, तो शम्सी ने कहा कि मैडम बस आज शाम को उसको डिस्चार्ज कर देंगे या कल सुबह. और फिर वो गई है उसके पास फॉर दिस रीइंफोर्समेंट सीन और उसकी हालत डिस्चार्ज वाली नहीं थी. शी वाज स्टिल इन फुल पट्टी, फुल oxygen mask and everything. She was in a full, what you may call it, not discharge mode at all. So I found that to be a bit of a flaw in the, I think वो पहले डाल देते फिर बाद में ये हम कर लेते. फिर what I enjoyed were the two, एक तो वो integrity वाला scene जब lawyer की और इसकी जो बात होती है क्या कहते हैं. अब मुझे वो इंटरेस्टिंग सस्पेंस रखा कि वो दो लोग लड़कों ने लेकिन आके dialogues, हाँ but dialogues were also very very good. They were very deep, they were very meaningful. और I think because ये लड़के ने इतना कुछ कहा है कि उसने कहा बैठ के कहता है अच्छा कॉफ़ी पिलाओगे, अब उसके बाद हमें नहीं पता कि वो क्या, बट दैट इज़ अ वेरी 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 गुड सीन. फिर वो जो दो लड़के आए हैं इसके पास, वही मैं कह रहा हूँ जो लॉयर, नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेग्रिटी सीन इज़ द वन विद शेरियार एंड हिज अंकल, जिसमें वो कहता है ना कि जब वो एक्चुअली कहता है ना कि एक जगह तुम खड़े हुए और एक जगह मेरी बहन और मेरा भतीजा, कहता है कि अब आपने इंटेग्रिटी वाली बात की, मीनिंग अब आपने सच बोला है ना, इससे पहले तो तुम मुझे राउंड अबाउट आंसर्स दे रहे हो. कहता है कि आई हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे साथ सच बोल रहे हैं. वो पूछा ना कि आप क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे. आई थॉट दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस सीन. फिर एंड में वो कहते हैं अच्छा कॉफ़ी पिलाओ. अब वी डोंट इवन नो शेरियार और उसके बीच में क्या बात हुई है. एंड ऑल्सो द सेम विद द बॉयज़, जब वो दो लड़के आए हैं. हो सकता है अमीना जी इसको कट दिया हो. क्या पता क्या पता, आवाज़ आई इतनी प्यारी. मीनिंग इसमें लिटरली जो आई थिंक आप दोनों कह रही कुछ भी हो सकता है. आई मीन लिटरली एनीथिंग कैन हैपन. नंबर्स आई थिंक मैं अभी आपको दे रही हूँ नंबर्स. एक चीज़, फिर लॉयर ने जब ये इसको कॉल करता है, वो कहता है कि मामू मुझसे मैंने आपसे बात करनी है तो आप प्लीज़ मेरे ऑफिस आएँ. तो मामू आके कहते हैं क्या बात करनी थी जो फ़ोन पे नहीं कर सकते थे. आई एम थिंकिंग हेलो इतनी बड़ी बात हो रही है, ये कोई सवाल है पूछने वाला. मुझे क्या जाहिर है इसीलिए बुलाया, और क्यों बुलाएगा. हाँ मामू आज का ज़रा वेदर बताएं, ये तो नहीं बुलाया. एक चीज़ लगी थी ना जो मुझे वीकेस्ट लिंक लगा था, मुझे था कि आप तीनों शायद उसको देखें. वो ये था कि वो दोनों दोस्त कहते हैं कि चलो यार उसके 20 मिलियन व्यूज़ आए, हम वीडियो डाल दें. वो वीडियो वो उनके थोड़ी डलवानी चाहिए थी. वो एक्चुअली शुजा के कैरेक्टर को खुद प्लांट करनी चाहिए थी वीडियो कि हाँ, तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि वो भी गेम खेल रहा है. भी लगा, हाँ, और उधर वो आके कहती कि वो माँ के सामने कहता नहीं मैंने नहीं डाली, कुछ भी ऐसा करता. रात दिन के एक्सक्यूज़ बनाते वो दो लड़के, वो वीडियो अपलोड करने का ये बनाता एक्सक्यूज़ कि हमारे पास वो वीडियो में ये पानी में गिरी है, ये भाई ने बचाया है. वो शुजा को करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे और आपने के लिए इंसान को अंडर द बस देना है तो फिर आप चीज़ें सोचेंगे ना मेरे पास क्या क्या मटेरियल है. तो शुजा शुड बी मोर विजिलेंट. या सो द अदर थिंग व्हिच आई रियली लव्ड वाज कि जमाल ने काफ़ी फोरफ्रंट लिया हुआ था ना शुरू में हॉस्पिटल में भी, और उसकी माँ को इधर ले जा रहा है, माँ को उधर ले जा रहा है, और माँ घबराहट में इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है उसके साथ. लेकिन जब वो घर आता है वो जब जाता है तो माँ फिर भी कहती है इसकी बात मैं मानूंगी. आई थॉट दैट वाज वेरी गुड बिकॉज द रियलिटी इज कि है तो ये कमीना आदमी बहुत अच्छा. So क्या हाँ नंबर्स देने मेरे लिए I would say 6, but I'll do 6.5. 6.5.
I found too many flaws this time. Too many flaws. ओके जी, महीना जी। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम था ओपनिंग सीन ऑफ एपिसोड 9 जहाँ बाप और जो मामू हैं वो एक बड़ी इंटीमेट सी कॉन्वर्सेशन एक होटल पब्लिक के एरिया में लॉबी है। में, हाँ। मुझे ये बात नहीं समझ आई। अच्छा, देन गुड पॉइंट। हाँ, द सीन दैट आई रियली रियली लाइक्ड इन द इंटायर एपिसोड, उसमें एक डायलॉग नहीं बोला गया जिसमें माँ और अब्बा जो है पहले बातें कर रहे हैं एंड राहिम अंदर आता है, बाप उसको देखता है, गेट्स अप, लीव्स, द मदर गेट्स अप, इशारा करती है बैठने का, ही गेट्स अप एंड लीव्स। इट जस्ट, मैंने कहा कि दोज फेस एक्सप्रेशंस जस्ट स्पोक volumes of what was happening in that house. I thought that was a brilliant scene. ये जो discharge वाली बात थी कि आज रात जा रही है और कल तक चली जाएगी and all, I feel that this is something which edit पे हम आप लोग इसको बचा सकते थे। मुझे hospital के from the girls point of view मुझे सारे scenes बड़े weak लगे। मुझे बिल्कुल ना performance मुझे वहाँ सही लगी, ना मुझे और ये एक औरत अंदर आ गई, फैमिली कहाँ है उसकी तब? आई नो दैट एक मेंबर ऑफ द फैमिली हमेशा होता है, ये हो नहीं सकता। वो शम्सी ले गया था उसको, वो था वहाँ पे, वो ले गया होगा। हॉस्पिटल में अकेला तो नहीं आप छोड़ा ना assume उसको कर नहीं, कमरे में। वो आप assume वही कर मेरे ध्यान में ये था कि चले शम्सी was there, शम्सी ने एंगेज कर लिया होगा, ले गया। आप ले जा सकते हैं, but you're एक attendant assuming होता है आपके साथ। आप कह रहे हैं कि ये हो गया होगा। हाँ, दिखा देते तो अच्छा लेकिन अगर आप दिखा देते अगर आप एक दिखा देते, because शी वाज इन दैट with her for a long time. और वो you're traumatizing the patient as well. ठीक है, वो तो आप reinforce, लेकिन आप traumatize भी तो कर रही है ना patient। नहीं, सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये कि शी इज नॉट ऑन लाइक प्रॉपर मॉनिटरिंग। Yeah, absolutely. After such a surgery, सबसे so हाँ। that's the biggest flaw. So I felt this time the scenes were very long and जो कासिम की beauty है, I mean like Qasim, you've shot this beautifully. I'm not taking anything away from you. It's just these 2 episodes. ये मुझे लगे कि सीन्स लंबे थे और इतनी वो जो नॉर्मली वो मूवमेंट देता है ना बड़े सीन्स में, लंबे सीन्स में, वो मुझे कम लगे। सो फॉर मी इट्स आल्सो 7 फॉर कासिम दिस। अच्छा, एक वो मेहरीन का भी सीन जो है ना जहाँ वो बेहोश हुई, और वो क्यों, उसका क्या था? और उससे पहले वो डर के क्यों आ रही है जब फोन बज रहा है? हाँ, वही मैं कह रही किचन में ऐसे आई, इससे कोई भूत है वहाँ? उसका बिहेवियर क्यों था ऐसे? अजीब मुझे था नहीं वो समझ सीन। आया। मुझे बहुत फ्लॉज लगे। मेहरीन का सीन नहीं सही हुआ, उसका बेहोश होने का जो सारा बिल्डअप था वो स्ट्रेंज। वाओ, आई थिंक अनबिलीवेबल। मुझे लगता है कि वो इन एंड आउट जो आ रही हैं फ्रॉम बीइंग नाइस टू द बॉय टू शम्सी टू दिस, ये जो परफॉर्मेंस दी है ना कि उसका नाम राहिम है, मीनिंग वो इतनी, एज शी सेड, कि वो इतनी बोरिंग हो सकती थी, वो इतनी बोरिंग और इतनी यूजलेस हो सकती थी, लेकिन उसने एलिवेट कर दिया उस सीन को। आई विश दे हैडंट कट टू उष्णा. I wish they just kept the camera on her, because she elevated that scene. She took it to another dimension. I don't know how I would have done it. I don't know how you would have done it. I don't know how she would have done it. And I think about it ना कि नहीं मुझे समझ, लेकिन उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है थ्रू आउट. मैं कहती हूँ शुरू से लेके अब तक जो the other thing Nadia said, that he has not kept her in the dark. He's not made her a villain. He's made her a woman जो desperate है अपने बेटे को बचाने के लिए, एक माँ का desperate है. And do you think she meant it कि बाहर उसको भेज देते हैं, पास किसको? राहिम को बाहर भेज देते हैं? I think that point she might have, लेकिन वो भी खेल रही है ना, वो भी वो कर रही है कि और देखिए वो अपने बेटे से जब आके पूछती है कि वो वीडियो तुमने डाली कि मैंने डाली किसी और, मैं बात करता हूँ, फिर वो कहती नहीं. You know, she thinks about, meaning उसका जो इंटेलिजेंट, वही मैं कह रही हूँ ना, सारे कहते हैं ना कि हम हैंडल कर लेंगे, किसी ने हैंडल नहीं किया. इसने हॉस्पिटल से लेके उनके घर जाने तक हर चीज इस औरत ने हैंडल की, हर चीज. आप इनके 3 ड्रामे प्रीवियस, कुछ अनकही में वालदा बनी हुई थी, मन्नत मुराद में तो शी अगेन एक नदर लेवल था कि ये वो हमारे पास आर्टिस्ट हैं जो अकेले पूरा ड्रामा उठा सकती हैं. ऐसे 2 ही लोग हैं पाकिस्तान में, एक इरसा और एक मासूमा की माँ, जो जितना मुश्किल कैरेक्टर दो वो ड्रामा उठा सकती हैं. अच्छा नहीं, ये तो अच्छा, ये I think she was मैं कह रही हूँ प्लीज काट दो, because you can't compare. नहीं ये तो जाएगा, ये तो हिस्ट्री में जाएगा. Please, you can't compare. Anyway, so कोई I think comparison ही नहीं है, like ये तो. So for me it's 20 for her. She was amazing. मरीना जी, शहरियार मुनव्वर.
Good. I think last time also what I said is the same کہ جب آپ فیلنگ کے ساتھ اپنے کیریکٹر کو سمجھ کے اس میں ایک جان ڈالتے ہیں تو پھر اس قسم کی آپ کی پرفارمنس نکلے جو پریکٹیکلی ایوری ون از ڈوئنگ ان دس پلے. اینڈ آئی تھنک شہریار کو ابھی ہم نے آئی تھنک اس کے 3 plays ہم نے ریویو کیے ہیں. دس از پرابلی the third one that we're reviewing. And I think he's done, like in Rad, he was this very weak, meek, mild لڑکا جو slowly وہ لڑکی اس کو دیتی ہے کہ نہیں this is who you are, تو وہ slowly he comes into himself. In this one I feel that جہاں اس نے رومانس کیا ہے it's believable, جہاں اس کا دل دکھا ہے it's believable, جہاں باپ کے ساتھ ایک ہوپ ہے کہ یہ مجھے ایکسیپٹ کرے گا دوبارہ, ابھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا لیکن کرے گا, وہ ہوپ آپ اس کو بلیو کرتے ہیں. ماموں والا سین as I told you was very nice. So Shehriyar is also, if Irsa is a 10, then I will give Shehriyar, for these episodes I will give him 8. 8.